हाय एवरीबॉडी। हिकु दो वरी असां मोटी आया आहियूं पंहिंजे कंक्लूजन जे तरफ़। असांजो कंक्लूजन अॼु आहे सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट जो, जंहिंमें असां ऑलमोस्ट 37 टॉपिक्स ते डिस्कस करे चुका आहियूं ऐं असांजा ही रिमेनिंग 3 टॉपिक्स ॿिया बि आहिनि, जिन में उमेद आहे त असांजी हिकिड़ी सुठी अंडरस्टैंडिंग बि थींदी ऐं उन सां गॾोगॾु असां इहो बि हिन महिल रिवीजन ऐं प्रैक्टिस कंदासीं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं पोज़ीशन में ऐं कीअं उन्हनि खे असां प्रॉपर नमूने सां करे सघूं था पिया। सो अचो स्टूडेंट, दिस इज़ रूल नंबर 38 where we are now talking about subjunctive mood. Subjunctive mood is what we call that we are talking about especially clause and sentence and clause structure together and how the structure subjunctive mood plays part in subject verb agreement. Rule says the verb in the subjunctive mood. Subjunctive mood means structure of the sentence. The verb in the subjunctive mood always take plural, even if the subject is singular in nature. समझ में आई ॻाल्हि? त subjunctive mood में जेकॾहिं को subject आहे ऐं उहो subject बि singular nature जो आहे, चाहे noun हुजे या pronoun हुजे, पर उन में असां जेको plural जेको verb रखंदासीं उहो असां plural रखंदासीं। सो इन शइ जो ज़रूरु तव्हांखे ज़हन ठाहिणु घुरिजे। The plural verb were replaces was. was खे replace करणो आहे, singular verb अची वञे replace करे छॾियो, plural आहे त plural ई लॻंदो, पर चवण जो मक़सदु छा, चाहे उहो subject singular हुजे या plural हुजे, उन में verb plural लॻंदो। थोरो अजीब थो लॻे पियो, या इन जी स्टेटमेंट में हीअं करे सघूं था पिया, were is written instead of was in the sentences that express। हाणे उन्हनि में कहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि? unfulfilled sentences are condition, untrue statement, उन्हनि में छा का wish हुजे, desire हुजे, condition हुजे। जेकॾहिं असां स्टडी कंदासीं पार्ट्स ऑफ स्पीच जी, उन्हनि पार्ट्स ऑफ स्पीच जे 5 काइंड्स में हिकिड़ो काइंड अहिड़ो बि आहे जिन में असां इफ सां गॾु वर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। यादि अचे थो तव्हांखे, उहो आहे ऑप्टेटिव सेंटेंसिस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अहिड़े क़िस्म जी बि स्ट्रक्चर ईंदी आहे ऐं उन सां गॾु ॿियूं बि आहिनि। These sentences are built in the following structure. Following structure. See which structure is there. If I were you. Now keep in your mind, I हमेशा I छा खणंदी आहे? I am खणंदी आहे। I verb जो plural structure खणंदी आहे, I have खणंदी आहे, I ऐं was खणंदी आहे, पर कॾहिं बि कंडीशनल या ट्रेडिशनल जुमलनि में वर इस्तेमालु नाहे थींदो। ट्रेडिशनल जुमला जेके असांजा टेंसिस ऐं वॉइस नरेशन इवन मूड्स में जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि, उन्हनि में असां वर जो इस्तेमालु आहे सां कॾहिं बि न कंदा आहियूं। सिंगुलर नाउन हुजे, सिंगुलर वर्ब लॻंदो, वर इस्तेमालु न आहियूं कंदा, पर कंडीशन अहिड़ियूं अची वञनि, unfulfilled, untrue, wish, desire, conditional one, then we structure is fulfilled in this way. If I were you, I would help you. It means he is not the same man, he is just demanding, wishing, desiring in this way. If I were you, I would help you. He is not in a position to help you, but he is just wishing the condition in this way. First sentence, I wish I were a doctor. I सां am पवे, I सां were पवे, पर wish इहो अञा just wish जेका true sense में नथी थिए पई या impossible हुजे, त उन जॻह ते असां हीअं इस्तेमालु, I wish I were a doctor. See the sentence, would that. Would that is equal to even if in optative sentences. Would that या if Qaid Azam were alive, impossible to be Qaid Azam were alive again. See, would that Qaid Azam were alive,
to see the deeds of current politician of the country. See the situations, but this is just untrue in a sense that this will not be repeated again. This will not the situation come again. See the next sentence. What is that? As if. As if. He boast. He boast. He boast as if he were a tycoon. Tycoon, extremely rich man. Rich businessman. Extremely rich financially. He boasts as if he were a tycoon. असां अहिड़े कंडीशन में if सां गॾु would that सां गॾु या वरी जेकॾहिं as if अची वञे त असां उन्हनि में अहिड़े कंडीशन जो असां इस्तेमालु कंदा आहियूं. He was talking in such a way as if. ॻाल्हाए थो पर लॻे थो त उहो ॾाढो थो वणे या का अंडर एस्टिमेट थो करे कंहिंखे ओवर एस्टिमेट थो करे पोइ त असां एज़ इफ ॻाल्हायो आहे त हिन जो मतिलबु आहे हे ईअं न आहे. He was talking in such a way as if I were his servant. Nobody is servant to this man, but he is the way he talks, the way he behaves. It seems that as if he were his servant. I were his servant. He sang I sang varu na pawando, but he were his servant. I were his servant. So this is just the subjunctive mood to talk about that. Now coming towards this sentence. Student, listen and visualizing this sentence as though this were not bad enough. Nuclear power in Pakistan is vastly more expensive than it was assumed to be. Sentence is written, find out according to subjunctive mood, find out what is there, what is the mistakes as it is. इते कहिड़ी mistake थी सघे थी पई? Error, find the error from this sentence. मां वरी repeat थो कयां पियो. As though this were not bad enough, nuclear power in Pakistan is vastly more expensive than it was assumed to be. बज़ाहिर असांखे यस अची वञे सम्झ में काथे अंडरलाइन कयो त हीअ मिस्टेक आहे. ॾिसो हिते लिखियल आहे दिस, हिते लिखियल आहे वर. बज़ाहिर लॻे थो त दिस सां गॾु वाज़ हुजे, इज़ हुजे या का ॿी ग़लती आहे. पर इन जुमिले जी जॾहिं तव्हां माना कढंदो उन माना खां पोइ तव्हां ॾिसंदो त उन में बि इहा ई कंडीशन आहे, अनफुलफिल्ड, अनट्रू विश, डिज़ायर. इन जे मुताबिक़ असांखे हिते ग़लती हीअ थी लॻे पई. छा हिते असांखे इफ इस्तेमालु करणु घुरिजे instead of as though if this were not bad enough. Otherwise स्टूडेंट खे जुमिलो ईंदो यकदम एरर आइडेंटिफिकेशन में. छा जेकॾहिं असांखे अंडरलाइन हे बि हुजे ऐं अंडरलाइन हेॾां छा हुजे, हेॾां दिस बि हुजे, हेॾां वर बि हुजे, त या स्टूडेंट हिते कंदो एज दो दीज वर, या हिते छा कंदो दिस के खां पोइ जेको वर आहे उन्हनि खे वाज़ करे छॾींदो. तो हीउ जुमिलो असांजो करेक्टेड कीअं हूंदो? एज इफ दिस वर नॉट बैड इनफ, न्यूक्लियर पावर इन पाकिस्तान इज vastly more expensive than it was assumed to be. So कॾहिं कॾहिं असांखे अहिड़ी स्ट्रक्चर में बि असांखे हलणो पवंदो आहे, ॾिसणो पवंदो आहे त हीअ कंडीशन सबजंक्टिव मूड त न आहे इन जे मुताबिक़. So this is all about rule number 38. Coming towards the next rule. The next rule says, actually student, before starting of this rule, this is all about, this is what written both, so several, all, much, both, all. These all are indefinite pronoun as a subject in the sentences. But before that, we have discussed indefinite pronoun. Those indefinite pronoun which comes as any, some, every, none. Any, some, every, none. 4 words. ऐं उन्हनि सां गॾु छा पियो अचे? उन्हनि सां गॾु अचे पियो
any सां body, anyone, anything, ये टे वर्ड पिया अचनि कहिड़ो वन बॉडी थिंग वरी सम सां ईअं पियो अचे एवरी सां ईअं पियो अचे ऐं नन सां ईअं पियो अचे नो वन नथिंग नथिंग नो बडी नो वन इहे सभु जो सभु जेके इंडेफिनेट प्रोनाउन हुया इहे सभु जो सभु छा पिया खणनि सिंगुलर वर्ब पिया खणनि चवण जो मक़सदु इहो आहे त indefinite pronoun doesn't mean to take only singular verb, but instead of that we can use somehow some words in to agree plural verb as well. See, the words are there. Both, it is not written anything after that. Both boys, both men, both girls, both are correct. Pronoun is only used for to agree verb there. Both are correct. Several were invited for dinner to dinner. All the seats have numbers. Much have been discussed covered. Both France and Spain are in Europe. So you are taken from your book. All are specified here. So up to this, these sentences, these are following indefinite prefers to more than one, unspecified. Everyone, anything, nothing, no one, these were specified. These are unspecified. Person or thing, they take plural verbs. There is an exceptional of these sentences are sometime. Listen, sentence number 6. All are specified. Coming towards two sentences are written here. All is well. Here all implies or specified is everything. So everything is specified, not unspecified. So this word somehow comes is to use as exceptional. All is well, all is not lost. जीअं हिकिड़ो ॿियो जुमिलो हूंदो आहे सम ऑफ द एग्स हाणे असांखे छा खे ॾिसणो आहे एग खे ॾिसणो आहे सम खे न आहे ॾिसणो सम ऑफ द एग्स आर रॉटन कॾहिं कॾहिं छा हूंदो आहे सम ऑफ द मिल्क हाणे मिल्क खे ॾिसणो अनकाउंटेड नाउन आहे सम ऑफ द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ हैज़ स्पॉइल्ड हैज़ स्पिल्ड so we can write in this way. So these are the exceptional. All is well, all is not well, all is not lost. So this is the rule, and in which I have just told you that a few words are from indefinite pronoun. They are unspecified and they can take plural verb there. And before this rule, I have even told you that somehow what is that indefinite pronouns are there. There was a grand list of some, any, nothing, thing. These were even told that these all are specified and that can take only singular verb there. Next rule is rule number 40. This rule actually this rule comes in definite and indefinite articles. जॾहिं असां आर्टिकल जो असां हिकिड़ो पोर्शन पढ़ंदासीं उन जो चैप्टर पढ़ंदासीं त उन में इन जो ज़रूरु उन जो बि ज़िक्र थींदो आहे छो त जीअं असां पढ़िया हुआसीं अ नंबर ऑफ ऐं द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब पियो खणे द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब पियो खणे अहिड़े क़िस्म जो द सां गॾु एडजेक्टिव पिया आणूं त प्लूरल पियो खणे अॻु में हिकिड़ा क्वेश्चन बि डिस्कस कया हुआसीं ही बि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सां गॾोगॾु ही असांजो आर्टिकल्स में बि चैप्टर में असांजो हिन जो ज़िक्र थींदो आहे सो दिस रूल सेज the plural surname can be used to mean the family take plural noun ta sabin you cast Sheikh Memun Diwan Sato whatever just to put s in the last and put the before that आखिर में s जो पहिरियों उन जे डेफिनेट आर्टिकल लखो इन जो मतिलबु पोइ थींदो आहे त इहो को हिकिड़ो माण्हू न आहे इहा हिकिड़ी फैमिली आहे ग्रुप में ना जस्ट हिकिड़ी फैमिली जे मुताबिक़ या वरी तव्हांजो पंहिंजो नालो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अशफाक इफ आई पुट द विथ माय नेम इट वुड बी इनकरेक्ट इन टू सम एक्सटेंट बट इफ आई राइट व्हाट
Ashfaq's is, putting is, then it would be necessary to put the before that. What does it mean? It means to, it means that it is Mr. Ashfaq, Mrs. Ashfaq, and their children. It means just immediate family. जेका immediate family हूंदी आहे उन में असां उन जी कास्ट में उन जे हेड ऑफ नेम में एस विझी छॾियो, पहिरियों उन में डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमालु कयो, उहो फैमिली जो नालो थी वेंदो आहे। हाणे ॾिसो इहो रूल छा थो चए, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द पिलुलर सरनेम कैन बी यूज टू मीन द फैमिली, टेक पिलुलर वर्ब। हाली छॾियो हिनखे, किताब में हलिया वञो, असां वटि हिकिड़ो आहे लेसन फर्स्ट ईयर में आहे द लेटर्स। उन लेटर में हिकिड़ो सेंटेंस मां खयो आहे, ॾिसो हुन छा लिखियल आहे, दिस वीकेंड विथ दी ब्राउन्स, this weekend with the Browns. Browns is a name of Mr. Brown and Mrs. Brown, name of a person, but when we put the with name, definite article the नाले सां न लॻंदो आहे, definite article the ज़ात सां न लॻंदो आहे, पर जेकॾहिं लॻंदो त इन जो मतिलबु आहे त उन में असांखे एस हणी पवंदी, पोइ फैमिली जो नालो थी वेंदो। हा, हिकिड़ी पॉइंट ॿी बि आहे, कॾहिं कॾहिं असां प्रॉपर नाउन सां आर्टिकल ए ऐं एन बि हणंदा आहियूं, नालनि जे मुताबिक़ हणंदा आहियूं। जीअं असांजे इंटरमीडिएट किताब में आहे, डू यू नो अ मिसिस जूडी ओकेंडम। वरी हिन जो हिकिड़ो ॿियो मतिलबु आहे, हुन जो मतिलबु हूंदो आहे त नाले सां जेकॾहिं तव्हां आर्टिकल हणो था, नाले सां आर्टिकल हणो ई न आहे, पर जेकॾहिं नाले सां आर्टिकल आहे त हिन जो मतिलबु आहे त इहो जेको माण्हू जो नालो खयो वियो आहे इहो टोटली स्ट्रेंज आहे, जंहिंखे ॿुधायो थो वञे पियो, टोटली अननोन आहे, अनफेमिलियर आहे, अनरिकॉग्नाइज्ड आहे, अननोन आहे, उन जे लाइ असां अ इस्तेमालु उते करे सघूं था। अदरवाइज प्रॉपर नेम डज़ंट टेक एनी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, बट हियर if you put definite article with nouns, with names, with caste, with surname, like the Brown, हाणे the Brown हिते छा थियो, इहा कास्ट आहे, इहो सरनेम आहे, इहो नेम ऑफ पर्सन आहे, ऐं हिन में एस लॻल आहे। जेकॾहिं ईअं हूंदो त उन में असां हिते डेफिनेट आर्टिकल द जो इस्तेमालु कंदासीं, रूल आहे हिकिड़ो डेफिनेट आर्टिकल जो बि। ॾिसो जुमला हिन जा, द ब्राउन्स, हाणे हिते इहा फैमिली थी वई, हिकिड़ी फैमिली आहे, ऐं फैमिली असां कलेक्टिव नाउन पढ़ियो होसीं त फैमिली जेको हूंदो आहे सिंगुलर बि खणंदो आहे, प्लूरल बि खणंदो आहे, पर हुन में सर्टेन कंडीशन हुई, पर हीअ फैमिली हिकिड़ी आहे मिस्टर, मिसिस एंड चिल्ड्रन। द फैमिली, द ब्राउन्स आर एंजॉइंग टू प्ले विथ अस। हिकिड़ी ॿी आहे बट फैमिली, हुन में एस लॻल आहे, आर्टिकल लॻल आहे, द बट्स हैव टू स्टे विथ अस फॉर अ मंथ। टी वरी कंडीशन आहे द शरीफ्स, शरीफ फैमिली जो नालो आहे, नालो आहे के फैमिली जे वॾे जो नालो आहे, ज़ात आहे। द शरीफ्स हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर। द मेमुन्स डू नॉट, डज नॉट न, डू नॉट डू विंडो शॉपिंग। लास्ट वन, द सलीम्स, सलीम नालो आहे, सलीम में एस ॾिनी आहे, नाले जो सिंगुलर प्लूरल न ठहंदो आहे, पर जेकॾहिं हुन में असां एस विझूं था, इन जो मतिलबु असांखे हुन में द रखणी पवंदी। हाणे हिन जो मतिलबु थी वियो, इट इज़ जस्ट अ फैमिली एंड वी अग्री टू द प्लूरल वर्ब। ऐं ख़बर आहे त कलेक्टिव नाउन जे फैमिली में बि सिंगुलर लॻंदो आहे, पर अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन हुजे त हुन में असां प्लूरल इस्तेमालु कंदासीं। द सलीम्स ग्रो रिच डे बाय डे। हिन जो मतिलबु आहे त जेका हिननि जी फैमिली आहे, सलीम जी फैमिली आहे सॼी, उहा सॼी ग्रोथ थिए थी पई, माना ग्रोथ थिए थी पई। इहो सलीम हिकिड़ो न, पर हुन जे फैमिली जा इंडिविजुअल फैमिली जा मेंबर्स जेके आहिनि उहे ग्रो था थींदा वञनि, ऐं उन्हनि में रिच बाय डे असां उन जे मुताबिक़ इस्तेमालु कंदासीं। तो असांजो हिकिड़ो अञा जस्ट हिकिड़ो पॉइंट रहे थी पई उन जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जी, उन ते बि असां डिस्कस हाणे कयूं था पिया। ऐं उन में बि ईअं ई आहे त जेका एक्चुअल सब्जेक्ट हूंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं माण्हू कंफ्यूज़ थींदो आहे, मां तव्हांखे उन जा डिस्कशन, तव्हांखे जुमला कुझु डिस्कस कयूं था त उन मां बि तव्हांखे थोरी ख़बर पवंदी। हाउ एवर असां ऑलमोस्ट कंक्लूड थी चुका आहियूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हाणे हिते ई मां नेक्स्ट तव्हांजो जेको कंक्लूजन जो लेक्चर हूंदो उन में मां 20 to 30 MCQs एंड एरर आइडेंटिफिकेशन जो तव्हां सां डिस्कस कंदुमि, त जीअं अॻु में बि कयो आहे, त जीअं तव्हांखे उन जे मुताबिक़ उन में तव्हांखे प्रॉब्लम जेके हुजनि उहे सॉल्व थी सघनि। Okay, student,
I just sum up to say the rules have been discussed, but even though I realize one thing, that we are lacking something in this subject verb agreement, that somehow the verb should agree with the real noun. Sometime there's no rule, but even though we have two subjects in the position of the subject, and sometimes we are baffled, confused, which one is the subject, real subject, to agree to the verb. Sometimes it happens in this way. The handout, what the discussion has been carried out, will be sent to you in PDF form to the website. You may download it in proper way. Second thing, I have made vocabulary up to 15 pages to you. That will be sent to you, the pages of vocabulary to you. You have to download it for the taste to do that one. Our next topic even would be very important one for interested in English portion, that is reading comprehension. Students are lacking how to read it in examinations. No doubt you will be given a passage, small passage will be given up to 100 words. You have to answer these passages within short span of time, and even being sitting in the examinations especially. So what to do? You have to practice of how to read, how to answer the questions, statements whether they are true or false. So practice makes man perfect. Do not worry and take tensions about academic and test. Doesn't matter about that. Your sincerity is required, nothing else. Your intentions will lead you towards your destinations, inshallah. So hope to two things. Vocabulary will be given to you, and the whole things we have discussed, that would have even already been formed and will be sent to you in this regards. It will help you especially in upcoming test as well. So this is not a rule, as I have written rule number 41. This is not rule, but rule we have even already discussed. 40 rules, as I have told you from the day one. See, sum up to the subject verb agreement. I just conclude this topic, that nobody, that is very lengthy topic to discuss all these things together. These are the words, somehow these sentences are there. Some sentences are written there. They come in this way. A reward of 50 pounds. Reward is written, 50 pounds is written there. Now we are confused, reward or 50 pounds. See, this word is actually what is written. The verb should agree with the real noun. Which one is the real noun? This what I tick here. This is I tick. A reward, I mean this is singular and would be singular there. A reward of 50 pound is भी singular आ, was भी singular आ, भाई सही है, जेको भी ता इस्तेमाल कयो, पर आर आई वर न था इस्तेमाल कर सकूं. A 50 of reward of 50 pounds is या was offered. So he असांजी agreement हिन सां इहा थी त ही reward singular आ त हेॾे बि singular ईंदो, बाक़ी जेको बि लिखियल हुजे. His knowledge of Sindhi vernaculars. Vernaculars छा के चइबो आहे? सिंधी लैंग्वेज के चइबो आहे, सिंधी डायलेक्ट्स के चइबो आहे, सिंधी स्ट्रक्चर ऑफ coinage and system जेको लैंग्वेज खे ठाहिण जो हूंदो आहे उनखे चइबो आहे. The knowledge, his knowledge of Sindhi vernaculars is far beyond the common. Common जी ॻाल्हि हुन में न आहे. So इन जे लाइ बि हिते knowledge आहे. Knowledge vernaculars जी ॻाल्हि कान्हे का. ॾिसो गॾु पिलुलर इस्तेमालु थियल आहे, गॾु पिलुलर पियो आहे, पर असां हिन खे खणंदासीं कंहिंखे रियल नाउन खे. The basics of grammar. ऑफ खां पोइ छा आहे, सिंगुलर इस्तेमालु थियल आहे, हेॾे आर पियल आहे. हिन जो मतिलबु आहे त हिन में ही जेको बेसिक्स आहे, असुलु इहो रियल नाउन आहे, इहो रियल सब्जेक्ट आहे, असां हुनखे एग्री था कयूं पिया. The prices of iPhone, prices not price. छा कंदी?
हिन में लफ़्ज़ इस्तेमाल थियल आहे वेरी, नॉट वेरीज़, वेरी प्लूरल आहे, हेॾे बि प्लूरल आहे, फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, राइट। अ बुके, बुके छा आहे, पढ़ियो आहे अॻु में असां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीकु आहे, बुके असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, गार्लैंड इस्तेमालु कंदा आहियूं। अहिड़े तरीक़े जा ॿ वर्ड ॿिया बि आहिनि, अहिड़े तरीक़े जा जेका असां इस्तेमालु कंदा आहियूं बुके में। हाणे हे वर्ड एक्चुअली असां कॾहिं कॾहिं हीअं बि लिखंदा आहियूं SACHET, ET इस्तेमालु नथो थिए, जीअं हिन में ET इस्तेमालु नथो थिए पियो। हिन खे पढ़ंदा आहियूं बुके, हिन खे पढ़ंदा आहियूं साशे, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े जो ॿियो वर्ड ॿियो हूंदो आहे कहिड़ो, उन में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं हीअं BUFFET, बूफे, जेका बी करे कंहिं दावत में मानी वग़ैरह खाइबी आहे। अ बुके ऑफ येलो रोज़िस, असां वटि येलो रोज़िस जी ॻाल्हि न आहे, असां वटि बुके जी ॻाल्हि आहे, पर ऑफ जे करे असां हुन में एक्सटेंशनल जेका शइ आहे उहा इस्तेमालु कंदा। अ बुके ऑफ येलो रोज़िस वाज, बुके इज कलेक्टिव नाउन, takes what singular verb there. A bouquet was yellow roses was present to the guest. Present to the guest. Okay. Next, the introduction of tea, coffee, 1, 2, and such other beverages. Beverages means any liquid thing to be served. Tea, cold drink, such kind of other things as well. Such other beverages. एज इस्तेमालु थियल आहे। ॾिसो हिकिड़ो नाउन आहे, हे ॿियो नाउन आहे, हे टियों नाउन आहे, पर छाजी ॻाल्हि आहे, इंट्रोडक्शन जी ॻाल्हि आहे। इहो इंट्रोडक्शन असांजो रियल नाउन आहे। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। द रूम एट द डे केयर सेंटर्स, द रूम एट द डे केयर सेंटर, जेकॾहिं हिते सिंगुलर बि हुजे या प्लूरल बि हुजे, जेको हिते अलोज़ इस्तेमालु थियल आहे इहो इन जे लाइ न आहे, इहो हिन जे लाइ इस्तेमालु थियल आहे। सो असांखे हे मां चवंदुमि त हीउ असांजो रूल त कोन्हे को, पर पोइ बि मां हिते लिखियो आहे, आई हैव जस्ट रिटन इन अ वे दैट समहाउ स्टूडेंट वर गिवन व्हेन द चैप्टर्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, व्हेनेवर यू रीड आउट द चैप्टर्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, most of the time it starts from this point, that which is the real one। अहिड़े क़िस्म जा बि हूंदा आहिनि, जीअं असां वटि हे जेको लफ़्ज़ आहे रिवॉर्ड ऑफ $50 किताब जो जुमिलो आहे, ऐं इवन अहिड़े क़िस्म जो बि त कंफ्यूजन छा, त असांखे रियल नाउन फाइंड करिणो आहे उन जे मुताबिक़, तो कॾहिं कॾहिं अहिड़े क़िस्म जी पोज़ीशन में ईंदी आहे। होप सो यू enjoy your studies, and from your enjoyment you learn and pick, be choosy to find out the new things in this regards. One thing more, ask questions, read questions, send questions, so that we may respond you in time। कोशिश कयो जेको तव्हां पढ़ो था पिया, क्वेश्चन कंदो त असांजी जी इंट्रेस्ट, तव्हांजी इंट्रेस्ट ख़बर पवंदी त किथे असां जी का शइ लैकिंग त नथी करे, ऐं इहा ख़बर पवंदी त तव्हांखे का शइ सम्झ में आई आहे या न आई आहे। सो डिस्कशन through sending questions is very much necessary and mandatory, so that we may learn to clarify many things in this regards. Thank you very much, student.